रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए बड़े फैसले। अब रविवार को भी चलेंगे एसी लोकल। जी हां, पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सियालदह डिवीजन में ट्रेनों के परिचालन, ठहराव और सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। यात्रियों के लिए बड़ी खबर यह है कि अब कल्याणी और कृष्णानगर के बीच चलने वाली एसी लोकल ट्रेनें रविवार को भी चलेंगी। रेलवे ने बताया है कि फिलहाल ये ट्रेनें ट्रायल बेसिस पर चल रही हैं। रेलवे ने बताया कि बनगांव एसी ट्रेन की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसमें औसतन 80 से 90% तक भीड़ रहती है। हालांकि रेलवे का मानना है कि सर्दियों के दौरान यात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी आ सकती है। ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। सियालदह स्टेशन को स्थायी स्टेशन बनाने के बाद अब बनगांव सेक्शन और मेन लाइन सेक्शन में भी कुछ स्टेशनों को स्थायी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर ट्रेनों का ठहराव परमुतली स्टेशनों पर शुरू हो जाएगा। बनगांव सेक्शन की ट्रेनें अब सियालदह स्टेशन पर सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेंगी। मेन लाइन की ट्रेनें अब सुबह 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेंगी। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनके रूट में भी विस्तार किया गया है। हासनाबाद बारासात के बीच चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बीबीडी बाघ से बैरकपुर स्टेशन तक चलने वाली ट्रेन का रूट अब कल्याणी तक बढ़ाया जाएगा। बैरकपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 को मेन लाइन की ट्रेनों के लिए समर्पित किया गया है। दमदम छावनी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 2 और 3 का उपयोग बनगांव लोकल के लिए होगा। साथ ही प्लेटफॉर्म 2 और 3 से चलने वाली ये ट्रेनें दमदम जंक्शन तक भी चलेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व रेलवे ने सियालदह स्टेशन पर विस्फोटों और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील किया है कि यदि आपको कोई असामान्य स्थिति दिखे या कोई व्यक्ति अनैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाए तो तुरंत रेलवे पुलिस या स्टेशन के बाहर खड़ी स्टेट पुलिस को सूचित करें। आप टोल फ्री नंबर 139 पर भी कॉल कर सकते हैं। पुलिस अब सियालदह स्टेशन के बाहर लंबी देर के लिए कारों को पार्क करने की अनुमति नहीं देगी। पार्किंग केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी। बता दें कि ये सभी बदलाव पूर्व रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए हैं। इन नई सुविधाओं से हजारों दैनिक यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। So in this case, as we have told in the last briefing that we are fixing the platform at Vidhannagar and Damdam. We had completed the exercise. That was the planning, and this is the final outcome that we have made. It's all final. So as per this schedule and discipline, the trains are being run at Vidhannagar and Damdam. All the mainline trains at Vidhannagar are being received at platform number 2. And on Damdam platform number 3, and the trains going towards this Damdam Kent or Bongaon or Hasnabad area are being received at platform number 3. So at Damdam. So this is the table. This is the general description that we had. Only difference is the memo trains. The number starts from 6. So these trains will not be as per the routine, because in the main line section, if suppose train is going, memo train is going to Lalgola, that will be received at platform number 2 in Vidhannagar instead of platform number 1, and at Damdam platform number 3. So very easily you can distinguish. EMU trains number start from 3 and all the memos are number 6. So with this discipline, all the trains are being run, and we will, I think, publish this also. So one passenger need not to worry to which platform he has to go. Next one. So these are the only 5 trains which are exceptions. So we have clearly listed down. First 2 trains, if you see, first 3 trains rather, these are non-peak hours. So this is not affecting the
crowded timing, and last two trains are also in the mid peak, not in the peak hours. So because of operational constraints, these 5 will be the exceptions. Like AC train which is coming from the same rake which is coming from Bongaon area, and now it is going to Krishnanagar area on the main line. So obviously this will be an deviation. There is only 5 trains. So this we have already done. Now we come to the next slide. So this is the new thing that we have planned to introduce very soon. As you know that already 3 pairs of AC locals have been running so far, and we had a good response for all the 3 trains. So 2 rakes which are available with us. With this we are planning one more service from Monday to Saturday, 6 days a week. Sealdah train will start at 15:10 hours and will reach Kalyani at 16:32, and on return from Kalyani 17:02 hours departure, and coming to Sealdah at 18:20 hours. So with this we hope that in return Kalyani it will be almost a peak hours. So many passengers may be travelling from Kalyani to Sealdah, because Kalyani has an educational hub and medical college, aims basically. So this train may cater the requirements of these people. And another service we had this Sealdah to Krishnanagar from Monday to Saturday. Already train service is there. Sunday we don't have any service. So on different timings, one special train on Sunday we had planned that will leave at 11:55 hours, and 14:20 to 20 it will reach Krishnanagar, and the return it will come back again at 18:20, because on Sunday many people would like to go for holiday and some excursion trips. So this can be a useful service. Right now these trains we don't know how much the patronage will be there. So these will run as a special trains, and if the good response is there, then these trains will be made regular ones. So within 2-3 days we will start the services, and we will notify when the services will start. Next one. We had this very good response about this Bongaon local. Bongaon AC local has got the maximum response. So always there is huge demand of more number of stoppages. We had already increased 5 number of stoppages. Again there is a strong demand from Bongaon and Gopal Nagar. So we have planned to give additional stoppages on experimental basis on these 2 stations. If we get a regular response number of passengers, then these stoppages will be made regular one. So these 2 will be the additional stoppages. The regular stoppage we have already listed down. There are so many stoppages are there. So as you see that our current security scenario after the blast in Delhi, or the political situation nearby, so Sealdah being the most congested and very heavily populated station, so more additional safety requirements are there, security points of view. So some measures that we have taken place, regular checking, even random basis frisking, scanning of the parcels, scanning of the luggages that are being taken, and CCTV cameras, vigilance, regular dog squad checks, and more and more. I think our senior DC divisional security commissioner will tell about you what we are thinking of, what we are expecting from the passengers. Passengers need to behave properly, and the vendors, the checking of the vendors, so that no untoward, because this area the footfall is so heavy and so crowded. Any small incident, even rumor can play a very disastrous role, you can say. So we cannot leave anything for chances at the Sealdah station. So I think I have covered the basic points that we have planned for this press conference. Thank you very much. क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में।
यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।